guarantor for that is the policy led by. ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ US ਮੀਡੀਆ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਇਹ ਛਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ अमरीका के खिलाफ थे जेड़े बरतानिया ने ऐ करता बरतानिया ने जो करता मसाद ने ये करता मसाद ने वो करता आ हुण फुफड़ बारे बोलो वो तो कहंदे भाई असीं रशिया दे नाल आ ते रशिया साडे नाल है ते ना रशिया बरतानिया ते ना मसाद रशिया दी है हुण क्यों नहीं बयान लोग देख रहे ने तुहाडे मूंह नहीं करदे की है सो अगली जिहड़ी वीडियो है वो आस्ट्रेलियन पार्लीमेंट दे अंदर सैनेटर साहब दी है सो बड़ी ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੀ ਵੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਈ ਜਾਨ ਭਾਈ ਜਾਨ ਲਾਈ ਜਾਨ ਦਾਈ ਜਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ feeling because their leaders are being targeted for political assassinations. Just a few short days ago, the US Justice Department announced that an Indian government official had directed the attempted assassination of a Sikh community leader on US soil. This follows the murder of Sikh leader Hardep Singh Nijjar in British Columbia, again directed by an Indian government official. These actions show how far to the extreme the BJP government in India has lurched. If the BJP administration is actively plotting to kill political opponents in the US and Canada, just imagine what's happening in India itself. All Australian politicians should now show solidarity with our Sikh community, who are the most visible targets of this extreme political violence. I know there's apprehension in the Sikh community about their safety here, and I can see why they're concerned. We have raised this directly with security agencies, including ASIO. ASIO has informed me that there is no current identifiable threat to the Sikh community here. The Sikh community is very visible in public places, and especially when they're involved in politics. They deserve a clear and direct assurance from the Australian government that proactive measures are being taken to ensure their safety. There must be a public statement from our government to the government of India that these actions represent a gross breach of international law that offends Australian values. Our government needs to make it clear that if something like this occurs in Australia, that it will be taken as a hostile act which will fundamentally undermine a bilateral relationship. It is essential this is said now to prevent this violence occurring in Australia. It's one thing to ride in a golden chariot and venerate a foreign political leader as the boss. But the hard politics is when you need to put principles and the collective good of Australians ahead of a media sugar hit or the promise of a lucrative trade deal. That's when politicians earn their keep. So it Pakistan च नहीं हो रही थोड़ी गल ना ईरान च हो रही है ना फिलिस्तीन च हो रही है ना चीन च हो रही है सो ये आस्ट्रेलिया च हो रही है वैस्ट च हो रही है जिन्होंने चिट्टी चमड़ी कहने हैं जितों तुसी कहने सी बाबे बच्चे लेके वापस आ जाओ क्रिसमस गंदी वड्डूगी क्रिसमस आने वाली है भाई चक्को अपने पीढ़ियां पूड़ियां ते गेट लॉस्ट जिहड़े इस सोच नूं नाल मिलण वाले लोग ने सो व्हाइट हाउस स्पोक्समैन ऑफ व्हाइट हाउस अमरीका सरपंच दुनिया दा ज्योति जिहड़ा तैयार करी बैठा है वो की कहंदा थोड़े मसले ते Thanks, John. John Feiner was in India this week and met with the External Affairs Minister and other Indian officials. The readout said that he addressed the government's investigation into the alleged plot to assassinate a Sikh American on U.S. soil. Can you provide any more on that, or did he get any assurances or any sort of timeline on when we would see this investigation? I'm not going to comment further on that. It's under active investigation. We've said that we're glad that our Indian counterparts are taking it seriously and doing that. We want those responsible for these attacks to be held fully accountable, but I won't get ahead of an investigation that isn't complete. Follow up on this. What impact this is going to have on your bilateral ties with India? Look, India is a strategic partner. We're deepening that strategic partnership. They're a member of the Quad in the Pacific, and we participate with them on a range, particularly of security-related issues, and we want to see that continue unabated. That said, at the same time, we certainly recognize the seriousness of these allegations, and as I said earlier, we want it fully investigated and those responsible to be held properly accountable. And the President is still planning to travel the Quad Summit in India next year? I don't have any travel to speak to today. मंडी बहुत बड़ी मंडी बहुत बड़ा इज्जड़ सो US कहना we don't care बड़ी मंडी छोटी मंडी बहुत सीरियस है असी इस मसले के ऊपर
ਸੋ FBI ਰੈਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ FBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਪੰਨੂ ਨਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਪੰਨੂ ਨਾ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਨਾ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨੇ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ FBI ਦੇ ਬਾਰੇ? ਹੁਣ ਬਾਈ ਹੁਣ ਭੱਜੋਗੇ ਕਿੱਧਰ? ਸੋ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੇ FBI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ NIA ਅੱਗੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਖਬਰ ਕਰਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ US 'ਚ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨ ਦੇ ਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ गिरफ्तार भी किया है, लेकिन गुप्ता नाम का शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया है। मामले 'ਚ भारत एक उच्च पदरी जांच कमेटी का गठन भी कर चुका है। हाल ही साजिश रचन के इल्जाम लगे थे। इस विचाले जो भारत के वालों हाई लैवल कमेटी का गठन भी किया गया है। ते हुण चर्चावां ने कि अगले हफ्ते भारत आएंगे FBI के डायरेक्टर। गुरपतवंत सिंह पन्नू के कतल की साजिश के इल्जामां विचाले भारत नां दी सेवी दसी जा रही है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां नाल गलबात कर सकते हैं। सूत्रों वाल वड्डी खबर करना साझी कर रहे हैं। NIA अगे गुरपतवंत सिंह पन्नू के कतल की साजिश का मामला भी FBI के डायरेक्टर के वालों चुकिया जा सकता है। अगले हफ्ते भारत आएंगे FBI के डायरेक्टर। दर्दी के भारतीय सुरक्षा एजेंसियों नाल गलबात करेंगे। बिना मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू फोन लाइन पे मौजूद हैं। शैलेंद्र, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर भारत फेरी पर और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ बातचीत कर सकते हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का। क्या कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे जो है वो आने वाले हैं भारत अगले हफ्ते, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये उस वक्त दौरा कर रहे हैं भारत का जबकि अमेरिका ने कुछ आरोप लगाए हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू के मर्डर प्लॉट को लेकर। हालांकि भारत साफ कर चुका है कि इस पूरे मामले को लेकर जो भी इनपुट्स जारी किए गए हैं, साझा किए गए हैं हिंदुस्तान के साथ में, उस पर एक कमेटी का गठन किया गया था और वो कमेटी जो है वो इस पूरे मामले की तहकीकात करेगी, वो पूरे मामले की जांच करेगी, जिसके बाद भारत उचित कार्रवाई करेगा। कल इसी बात को दोहराया गया विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से।